हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सोम के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इंटरव्यू और वाइवा के क्वेश्चन जो कि हम लोग गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं या पीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर पीएसयू के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर आप कोई वाइवा एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए कुछ टॉप 100 क्वेश्चन है जो आप लोगों को बेसिकली एज ए इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, और आप जब आप इंटरव्यू देने जाए तो उसको आप इस डिफरेंट क्वेश्चन को एक बार आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे है डिफाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो उसकी डेफिनेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं। देन डिफाइन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। देन व्हाट इज स्केच एंड कंपोजिट बार। डिफाइन पॉइजन रेशियो। देन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन राइट द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। देन व्हाट इज स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि होती है क्यू बाय जो आपको शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन जो होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो मैं शो करता हूँ इस से। देन बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको बोलता हूँ मैं बल्क मॉडुलस। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है। देन डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। देन स्टेट द टू कंडीशन एम्प्लॉयड इन सॉल्विंग अ कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू एक्शियल लोड। जब आप कोई कंपोजिट बार को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से लोड एक्शियल लोडिंग में देखेंगे, आप उसको डिफाइन कीजिए। देन व्हाट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है। Then give example for gradually applied load and suddenly applied load. Example for gradually applied load. Then 16 questions. 16th वाला क्वेश्चन हो गया आपका the impact strength of material is index of its toughness. In brittle material, normally breaking stress is equal to ultimate stress. Thermal strain of a body does not depend on length. Next, thermal change of length of metal is directly proportional to its thermal coefficient. 20 number question. In ductile material, ultimate stress is higher than nominal breaking stress but lower than breaking stress. The property of a material which allow it to be drawn into a smaller section is called ductility. The loss of strength in compression due to sustained loading is known as creep. ये जो मैं आपको जितने भी आपको ये जो वर्ड फाइल है मेरी, ये मैं चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो डायरेक्टली आप जाके वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं कि ये किस तरह से हम लोग इसको हम लोग आपको कभी एग्जाम प्रिपेयर करना हो तो आप उसको डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। Then the maximum strain energy that can be stored in a body is known as proof resilience. The total strain energy stored in a body is called resilience. Proof stress is stress causing a specific permanent deformation, usually 0.1% to 0.2%. Thermal strain caused in reinforced composite body due to change in temperature will be same magnitude. Next, within elastic limit, actual stress is less than nominal stress. 28 number question, the energy absorbed by body when it is strained within the elastic limit is known as resilience. Value of factor of safety is greater than 1. Next, Hooke's law is truly valid up to proportional limit. Next, in ductile material, nominal breaking stress is lower than true breaking stress. Next, mild steel is widely used in reinforced concrete because thermal coefficient is almost equal to concrete. In tension test, actual stress is equal to or greater than nominal stress. For a mild steel, yield stress is nearly equal to elastic stress. Metal used for suspension system and spring action should have high resilience. Mild steel is more tougher than high tensile steel. To prevent fatigue,
failure, the stress developed should be kept below endurance limit. In brittle metals, the failure surface is 90 degree angle to the direction of a load. Direct stress are caused due to axial load, shear stress at parallel to sections. Shear stress किसके parallel होता है? Section के. Wood is an example of orthotropic material. Shear stress cause angular deformation. Next 43 question. In a shaft rotated by couple, the shear force varies from 0 to at the center to a maximum of the circumference. The shape of the bending moment diagram over the length of a beam having no external load is always linear. The stress at which extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in load. That's called a yielding point. A simply supported beam of span L carries a uniform distributed load W. The maximum bending moment M is WL by 8. A member which does not regain its original shape after removed of a load producing deformation is said plastic. When a rectangular beam is loaded transversely, the maximum compressive stress develops on top fibers. Column of a given length, cross section and material have different value of buckling load for different ends condition. The strongest column is one whose both ends are fixed. The center of gravity of a uniform lamina lies at the midpoint of its axis. ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको पीएसयू गेट वगैरह में, वाइवा वगैरह में, या फिर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, उसमें आपको ये सब क्वेश्चन आपको रीड आउट करके जाना चाहिए एक बार. इनमें से कुछ बेसिक आपको एक दो क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर या एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से बैठ सकते हैं. द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट अ शाफ्ट कैन रेजिस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ permissible shear stress and polar modulus. The deflection of any rectangular beam simply supported is inversely proportional to its depth. A beam is said to be uniform strength if bending stress is same throughout the beam. The ratio of limiting friction and normal reaction is known as coefficient of friction. In a solid arc, shear force acts perpendicular to the axis of arc. A long vertical member subjected to axial compressive load is called a column. The property of a material by which it can be drawn to a smaller section due to tension is called ductility. The unit force of SI unit is Newton. The value of Poisson ratio always remains less than 1. The beam is said to be uniform strength if the bending stress is same at every section along its longitudinal axis. The coefficient of friction depends upon the nature of surface. When load are applied proportionally to the frame structure containing its member in one plane, the structure is called stress frame. The maximum bending moment due to moving load on a simply supported beam occurs under the load. The CG of a solid hemisphere lies on the central radius 31 degree. In rectangular column, the core is rhombus of diagonal b by 3 and h by 3. Dynamic friction are compared to static friction is less. Forces are called coplanar when all of them acting on body lie in one plane. Ties are load carrying member of a frame which are subjected to axial tension load. A simply supported beam L plus 2A with equal overhang carries a uniform load over the whole length. The beam changes sign if L is greater than 2A. According to the principle of moment, if a system of coplanar force is in equilibrium, then the algebraic sum of the moment about any point in their plane is 0. Along the neutral axis of a simply supported beam, fiber does not undergo strain. The ratio of the moment of inertia of a rectangular plate and that of a square plate of equal length is equal to 3 pi by 16. The energy stored in a beam of length L subjected to a constant bending moment is m square L by 2 upon EI. Two collinear parallel equal force acting in opposite direction constitute a couple. If a constant section beam is subjected to a uniform bending moment throughout
its bend to circular arc. As compared to uniaxial tension or compression, the strain energy stored in bending is only 1/3. The effect of arching a beam is to reduce the bending moment throughout. The D'Alembert principle is used for reducing the problem of kinematic to equivalent static problems. The range within which a load can be applied on a rectangular column to avoid any tensile stress is 1/5 of the base. For the same height, the bottom width for no tension for rectangular section is same as to that of rectangular section. Coefficient of friction is the ratio of limiting friction and normal reaction. An arc may be subject to a thrust, shear force and bending moment. 83 number question. The CG of a right circular solid cone of height h lie at the following distance from the base is h/4. For a channel section, the shear center lie at a distance of d square b square by t by 4 upon I. For a beam of uniform strength keeping its depth constant, the width will vary in proportion to bending moment. The product of either force of couple with arm of the couple is called moment of couple. सिंपल बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बेंडिंग इक्वेशन की आप इक्वेशन बताएं, तो अब उसमें बोलेंगे m/i E/r/f/i a/y सॉरी the algebraic sum of moment of the force forming couple about any point in the plane is equal to the moment of the couple. The equivalent length of column fixed at both ends is 0.5 L. The ratio of elongation of conical bar due to its own weight and date of prismatic bar of the same length is 1/3. The possible loading in various members of a framed structure are compression or tension. A simply supported beam of a span L carries concentrated load W at its mid span. The maximum bending moment is WL/4. Weight of the body is due to gravitational force of attraction towards the center of the earth. The section modulus of a rectangular section is proportional to area of the section. The material which have the same elastic property in all directions are called isotropic. A single force and a couple acting in the same plane or rigid body cannot balance each other. Center of percussion is a point of application of the resultant of all the forces tending to cause a body to rotate about it a center axis. The shape of the bending moment diagram over the length of a beam carries a uniform distribution load UDL is always parabolic. In a beam, the neutral plane does not change during deformations. The moment diagram for a cantilever whose free end is subjected to a bending moment will always be rectangular. तो ये मेरी तरफ से कुछ 100 क्वेश्चंस थे जो कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर आप आफ्टर लेक्चर जैसे कि आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया हो तो उसमें आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप ये कुछ 100 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इन 100 क्वेश्चन में से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको एसएससी वगैरह में या फिर पीबी व्यापक वगैरह जो एग्जाम होती है सब इंजीनियरिंग की या फिर इंटरव्यू आपके कोई देने जाएंगे या फिर वाइवा क्वेश्चन देने जाएंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कोई भी ये पूछ सकता है। तो प्लीज़ ये कॉमन रहेंगे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए और आगे मैं कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन और इसमें बनाऊंगा और इंटरव्यू क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको अपने कलीग्स के साथ में ताकि ये नॉलेजेबल चीज़ सभी के साथ ये फॉरवर्ड हो जाए। थैंक यू।